Alright, so in this one, we are going to discuss about alkynes. So till now, we have done starting from the introduction, then we did nomenclature, then we did isomerism, then functional groups, then we started with each chemical alkanes first, then we did alkenes, and now we are going to cover alkynes. So alkynes have a general formula of CnH2n minus 2. CnH2n minus 2. Alkanes का है CnH2n plus 2. Alkene is CnH2n and alkynes is CnH2n minus 2. So they have a triple bond. So one basic alkyne I'll draw, which is ethyne. So if I have to draw this, so its formula will be C2 2n minus 2 means C2H2. This is ethyne. So, and if I have to draw it, then it will be this C. This is ethyne, C2H2. So अभी start कर देते preparation और कुछ इसमें नहीं है तो we'll begin with the preparation. So first method of preparation we'll use another preparation. इसमें हमारा first one is लैब. इट इज फ्रॉम लैब मेथड. वो भी याद रखो कौन सा लैब है कौन सा इंडस्ट्रियल है. डे में ऐसा जस्ट से राइज रिएक्शन फॉर लैब मेथड, सो वी शुड. सो इट इज लैब मेथड. फर्स्ट वन इट इज फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड. कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2 प्लस. इसको अगर ऐसे लिखना है तो Ca तीन आएंगे CaC2. So CaC2 plus if we take 2H2O, then this will give us C2H2, of course our required product. and अभी देखो C2 चला गया, इसमें से H2 चला गया, तो बचा क्या है? 2H बचे हैं और 2O और Ca. So it will give us CaOH twice. सो इसको ये फैंसी तरीका है लिखने का. ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं. CaC2 भी लिख सकते हो. CaC2 plus 2H2O will give C2H2 plus CaOH twice. This is cold water. Cold water we take and we get ethyne gas. And ये अभी इक्वेशन जस्ट मेमोराइज करना है और इसमें कुछ नहीं है. इसके impurities वगैरह कुछ आते हैं. So those impurities are removed by passing through water, and the ones which remain from potassium dichromate, but that is not much important as such. तो equation ही main है, वही याद रखो. Now second is general method, which is important very much. चलिए लैब में ही दिया मैंने, तो we will lab method 1 and lab method 2. So the second one में we are going to use, अभी देखो हमने alkene में क्या यूज किया था. In alkene we had used C2H5Br. बराबर, we had used C2H5Br. This gave us ethene, but now we want ethyne. So in this case we are going to use C2H4Br2. this will be yeah. So ये बनेगा 1,2 डाइब्रोमोइथेन. and if you remember, अभी ये कॉम्पिटेंसी बेस में ऐसा पूछ सकते हैं. अगर अच्छे से देखोगे तो ये इधर इथेन है ना, ये इथीन, इसका हेलोजनेशन करने पे आई एम गेटिंग दिस प्रोडक्ट विच इज 1,2 डाइब्रोमोइथेन. दे में आस्क यू अ फिल इन द ब्लैंक, और दे में आस्क ऐसा कि the reactant which is obtained from another
फ्रॉम अनदर हाइड्रोकार्बन, या ऐसा सम कुछ ना कुछ करके देना, आज ये याद रखो सिर्फ। इसमें कुछ लाइक देर इज नथिंग थियोरी अबाउट दिस, ये कॉन्सेप्चुअल आ सकता है ऐसा, कि ये याद रखो कि C2H4 जो है वो जब उसका हेलोजनेशन होगा, उसका जो प्रोडक्ट आता है वही हम इसमें एज अ रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं। दिस इज एग्जैक्ट सेम थिंग। चाहिए तो इसका स्ट्रक्चरल भी बना देता हूँ इसका, एक सेकंड। हाँ, इसका स्ट्रक्चरल भी बना देते हैं। दिस विल बी, याद रखना, ये मुझे लगता है ये ऐसा कॉम्पिटेंसी बेस्ड, और क्या होगा कॉम्पिटेंसी, ये ऐसे ही कर सकते हैं। तो ठीक है, ये C2H4Br2 है। सो ये देख लिया, अभी मैं इरेज कर रहा हूँ, मेरे को कलर नहीं चल रहा। टेक अ बेटर कलर। हाँ, we have C2H4Br2। इसमें we will put KOH, पर अभी बैलेंसिंग याद ही कर लो, 2 KOH डालते हैं and we boil it, so we will get our required product, प्लस ये सेम रिएक्शन है इथीन जैसा, KBr2 आएगा क्योंकि दो दो है दोनों, प्लस H2O। H2O भी, H2O will also come to, सो ये भी मेमोराइज कर लो अच्छे से, बिकॉज तो ही ये क्लिक होना चाहिए कि इथिन होगा तो इट इज C2H5Br प्लस KOH विल गिव C2H4 प्लस KBr प्लस H2O। एंड अगर ये होगा तो ये 2 KOH है एंड इट विल गिव C2H2 प्लस 2 KBr प्लस 2H2O। ये ट्राई टू मेमोराइज इट, these equations, there are not many equations total मिला के ऑर्गेनिक में 30 equations है, 25 to 30 equations, but if you try it to like link it with each other तो they reduce and it is not that difficult. So anyways, हाँ, preparation तो इतना ही था। then we have next is chemical properties। सेम है अगेन, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं रहा हूँ अभी। we have chemical properties which is the exact same as alkene. Still, we will try it. First is hydrogenation. हाइड्रोजनेशन सेम है, जैसे अल्कीन में था, अल्कीन में हाइड्रोजन डालोगे तो अल्केन बनेगा। तो इसमें C2H2 में अगर हाइड्रोजन डालेंगे तो हमें मिलेगा C2H4, इसमें हाइड्रोजन डालेंगे तो मिलेगा C2H6, प्रोवाइडेड निकल है 300 डिग्री सेल्सियस है, निकल है 300 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, दिस इज सिंपल। ये इसका एंड प्रोडक्ट नहीं है, ये दो अलग अलग रिएक्शंस है। अरे यार तुम लोग एक सेकंड, वरना अगर, ठीक है, ऐसा लगेगा कि उसका प्रोडक्ट आ रहा है H2। दिस इज अ टू स्टेप रिएक्शन, C2H4 प्लस H2 अगेन इफ आई डू, I will get, and same condition I will get C2H6। so for इस फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, अल्काइन, फर्स्ट स्टेप में हुआ अल्काइन टू अल्कीन, एंड सेकेंड स्टेप में हुआ अल्कीन टू अल्केन। ठीक है, ये याद रखो। and second one is again halogenation, again the same thing, halogenation, same thing again। इसमें पहले let us make ethyne C2H2 है, इसमें Br2 डालो तो इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा, पहले ये बनेगा, this will be 1,2 डाइब्रोमो इथीन। इथीन इज इम्पोर्टेंट, बहुत लोग इधर इथेन लिख देते हैं, इट इज डाइब्रोमो इथीन, 1,2 डाइब्रोमो इथीन। एंड अगेन दिस इज ऑल्सो टू स्टेप, क्योंकि ये अभी थर्ड हाइड्रोकार्बन है। सो
ये इसमें वी फर्दर पुट Br2, इसमें और अगर Br2 डालेंगे तो हमें मिलेगा भी दूसरा बॉन्ड भी टूट जाएगा। पहले में ट्रिपल बॉन्ड का डबल हुआ, अभी डबल का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। एंड दिस विल बी 1,1। इसका नाम इंपॉर्टेंट है, इसका नेम विल बी 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो ethane. This time it is ethane. 1,1,2,2 tetrabromo ethane. And again this again this very important observation is that brown color of bromine solution is discharged or is decolorized or it is discharged. More important observation. This will come definitely somewhere or the other. So this is a very important test for unsaturation. ये मैंने पहले भी कहा है, 7 में भी मतलब अल्कीन में भी मैंने कहा था एग्जैक्ट सेम थिंग, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन एंड brown color of bromine water gets discharged or decolorized. Exact same thing I had spoken that. So ये हो गया इसका टेस्ट। नाउ इसका कंबशन रिएक्शन लिखते हैं। नंबर 3 कंबशन। So we have C2H2 plus O2 will give CO2 plus H2O। इसमें आई गेस IO2 है एंड 2 4 to the 8 4 4 balanced, हाँ 2 5 4 2। हाँ दिस इज कंबशन रिएक्शन, कंप्लीट कंबशन अगेन सिलेबस में उतना ही है। एंड नाउ द यूजेस का थोड़ा सा पार्ट। यूजेस में तो पहला ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में यूज होता है। फिर इट इज यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। आर्टिफिशियल दिस इज मतलब ऐसा आप ओन वर्ड्स में काइंड ऑफ लिखोगे तो ये यूजेस चलेगा, सिर्फ यूजेस के लिए सिर्फ, बिकॉज लाइक इट इज नथिंग साइंटिफिक अबाउट इट ना, तो आप खुद के वर्ड्स में लिख सकते हो आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। देन we have another use as can just state manufacture of organic uh, compounds। और हाँ तो यूजेस एज सच इतने ही हैं, वो सब यूजेस ये इवन इफ यू डोंट लाइक मेमोराइज इट, सिर्फ इतना पॉइंटर्स याद रखोगे। सिर्फ ये एक याद रखना कि आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट इथीन और इथाइन में है, बिकॉज दिस इज यूज्ड। ये एक इम्पॉर्टेंट, सिर्फ थोड़ा सा लाइक इम्पॉर्टेंट कह सकते हो। बाकी ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम उसमें ऑक्सी इथिलीन था, और मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो जनरल है। यूजेस इसका यूजेस इथेनॉल का इम्पोर्टेंट है, तब मैं बताऊँ। इसका यूजेस नॉट मच ऐसा, लाइक यू कैन जस्ट नो देम, like it's okay even if you don't like memorize it, but equations are must, वो memorize करना है। alkyne में इतना ही था। We will quickly go through entire thing what we did. First we did the general formula, then preparations, lab method में we use CaC2 plus 2H2, C2H2 plus CaOH twice मिलता है।
Then this is the second lab method. Second lab method C2 C2H4Br2, which is 1,2 dibromoethane, जो इसका इथेन सॉरी जो इसका आउटपुट था 1,2 डाइब्रोमोइथेन, वो भी इसमें एज अ रिएक्टेंट यूज हो रहा है. प्लस 2KOH boiling will give us ethyne plus KBr plus water. Now chemical properties. This is again the same thing as alkene. Ethene में पढ़ा था ये already. This is the same thing. This is also the same thing again. Then this observation is important very much, and combustion reaction का बैलेंसिंग के साथ मेमोराइज करना इज इम्पोर्टेंट. सो मेमोराइज करना इज क्वाइट इम्पोर्टेंट. एंड इसके जनरल यूजेस वी वेंट थ्रू. सो दिस वाज अल्काइन वेरी स्मॉल. नाउ इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड जो नेक्स्ट हमारे है वो थोड़े इम्पोर्टेंट और थोड़े उसमें है कंटेंट. बट अल्काइन वाज प्रीटी शॉर्ट, बट दैट इज थोड़ा स्ट्रेस थोड़ा लाइक हैवी वेट है वो. सो दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन ये सब पढ़ो अच्छे से. एंड या थैंक यू.